श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरे नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गापदक्रमपनिषदयार्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तथागतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नं विदुषुरसुरगण देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चित जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृता कुण्डल प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधाना पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी बना दम्बुजे बसतु मे तैलोके माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासयामिता तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथामसुदोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्यमुनि, त्यहाँ उपरान्त इन्द्रादि 33 कोटी देवताले श्री महादेवजीले सतीदेवी पीठमा हाली पृथ्वी भ्रमण गरी हिँडेको देखि वैकुण्ठमा गई विष्णुसित बिन्ती गरे। हे परब्रह्मा, यो ब्रह्माण्ड संसार तिमीले रचना गर्छौ, महादेवले रक्षा गर्छन्, तिमी दुईले रक्षा नगरे कसले रक्षा गर्ला? यस बखतमा महादेव दक्ष प्रजापतिको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा लिई पृथ्वीमा भ्रमण गर्दैछन्। जहाँसम्म सतीदेवीको शरीर रहला त्यहाँसम्म महादेवले त्यसै गर्नेछन्। यस अर्थले तपाईले झिङ्गा उत्पत्ति गरी अंश अर्थात् किरा पारी सतीदेवीको शरीर गलाई पतन गराइदिनुहोस्। यति इन्द्रादि देवताले भनेको वचन सुनि विष्णुले भने, हे इन्द्रादि देवता हो, तिमीहरूले भलो भन्यौ। मेरा मायाले माखा उत्पत्ति गरी अंश पारी सतीदेवीको शरीर गलाई पतन गराउँला, सन्देह नगर। अब अमरावती जाऊ। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि इन्द्रादि देवताले हौस् भनी विष्णुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। त्यहाँ उपरान्त विष्णुले इन्द्रादि देवताका वचनले आफ्ना मायाले माखा उत्पत्ति गरी अंश पारिदिए। सतीदेवीको अङ्ग खण्ड खण्ड गरी पतन भयो। जहाँ जहाँ सतीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ चतुर्भुज ब्रह्माले एक स्वयम्भुलिङ्ग उत्पत्ति गराए। पहिले नेपाल खण्डमा गुहे पतन भयो। नेपाल पीठ गुहेश्वरी देवी चन्द्रघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महोदय दब उत्पन्न भयो र शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर कलियुगमा 33 कोटी देवता भनी प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि काम रूपमा गई
छाती पतन भयो। त्यहाँ कामरू पीठ कामाक्षा देवी कर्ती योगिनी चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई स्वर्ग मर्त्य र पाताल तीनै लोकमा यक्षगण भनी प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि वाराणसीमा गई शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी संकटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गन्धर्वगण आई गान वाद्य गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्ध होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पौरबन्धनमा गई दाहिने कान पतन भयो। त्यहाँ पौरबन्धन पीठ अम्बिका देवी चन्द्रबेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि काश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। त्यस काश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी ब्रह्मपारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई मनोकांक्षा सिद्ध होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कन्नौजमा गई अङ्गको छाला पतन भयो। त्यहाँ कन्याकुञ्ज पीठ झङ्केश्वरी योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। त्यहाँ पूर्णगिरी पीठ कपाला कुण्डला योगिनी चण्डेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस हर्ष भूमिमा गन्धर्वगण आई नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका मुखिन्ज्याला कहिले नचुके भनी वरदान दिइन्। फेरि चामुण्डचलमा गई नङ पतन भयो। त्यहाँ चामुण्डचल पीठ पुकन्जी देवी कालिका योगिनी इच्छा बिरुकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद ऋषि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो भाग्य सिद्ध होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तातकमा गई दाहिने हात पतन भयो। त्यहाँ अस्तातकमा पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निन्द्रपतिश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण दाहिने हौन् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकबारमा गई बायाँ हात पतन भयो। त्यहाँ एक बार पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्ध योगिनी दधीश्वर उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्न भूमिमा कर्णवीर प्रभृति श्मशान आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिशोतमा गई मलद्वार पतन भयो। त्यहाँ त्रिशोत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यमराज आई नाना प्रकारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माको सृष्टि र संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्टमा गई घाँटी पतन भयो। त्यहाँ कामरोक्त पीठ कामिनी देवी कालेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा पृथ्वी माता आई नाना प्रकारले पूजा गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान भइस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा गई दक्षिण पाउ पतन भयो। त्यहाँ कैलाशपीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा चतुर्मुख ब्रह्मा आई नाना यज्ञ गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। ब्रह्माले स्वर्ग मर्त्य र पाताल तीन लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि
भिङ्गुमा गई उपल्ला दाँत पतन भयो। त्यहाँ भिङ्गु पीठ मिताक्ष देवी ब्रह्मदहा योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा धर्मदत्त राजा आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तँलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गई बायाँ हात पतन भयो। त्यहाँ केदारपीठ केदारेश्वर देवी मुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा एकादश रुद्र आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। एकादश रुद्रले हामी सबैको बराबर तेज होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा गई दक्षिण नेत्र पतन भयो। त्यहाँ चन्द्रपीठ सिद्ध किला देवी सिद्ध योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा 10 दिक्पाल गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको आफ्नो आफ्नो दिक् स्थिति रहोस् भनी वरदान दिइन्। फेरि श्रीपीठमा गई तालु पतन भयो। त्यहाँ श्रीपीठ भद्र योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टवासु आई षोडशोपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। अष्टवसुले इच्छा सिद्धि होस् भनी यस्तो वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा गई नाभि पतन भयो। त्यहाँ एकावीर पीठ एकावीर देवी गोरक्षा योगिनी हाटेकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा नागहरू आई रत्नहरू चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। नागहरूले सप्त पतालको अधिपतित्व पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जलन्धरमा गई तल्लो ओठ पतन भयो। त्यहाँ जलन्धर पीठ जल्पादेवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा कामधेनु गाईले नित्य दूध चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन् र कामधेनुले मेरो दूध मल र मूत्र पवित्र होस् भनी मागिन् र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लाबीमा गई बायाँ पैताला पतन भयो। त्यहाँ मल्लाबी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा द्वादश दीक्षा आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। द्वादश दित्याले 12 महिनाको अधिपति हौ भनी मागेर ईश्वरी तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कुशलान्तमा गई केश पतन भयो। त्यहाँ कुशतान्तक पीठ श्मशान काली देवी भूत घण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन् र नक्षत्रहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रा अधीनमा रहोस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि देवी कोटमा गई देब्रे घोडो पतन भयो। त्यहाँ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा मेघ आदि 12 राशि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि गोकर्णमा गई बायाँ कान पतन भयो। त्यहाँ गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एक जङ्गा योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा
भादी योगले महाकष्टसँग तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मातुलेश्वरमा गई दाहिने स्थान पतन भयो। त्यहाँ मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी, पिङ्गाला योगिनी, बुधरा घेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्नभूमिमा कश्यप प्रभृति ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधिकारमा हुन् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि अट्ठाहासमा गई तल्ला दाँत पतन भए। त्यहाँ अट्ठाहास पीठ भ्रामारी देवी, शङ्खधारी योगिनी, सतभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा बागमती प्रवृत्ति गङ्गा आई जल चढाई भक्ति गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान ल्याऊ भनिन्। बागमती प्रवृत्ति गङ्गाले मुक्तिको अधिकार होस् भनी वरदान मागिन् र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा गई बायाँ स्थान पतन भयो। त्यहाँ विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी, भुवन योगिनी, कृष्ण वर्णेनाश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कृष्ण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कृष्णले 3 लोकका स्त्रीहरू मदेखि मोह हुन् भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। ओम उपनायोतो मङ्गलवा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमाना दिनकर किरानन बोधित नाम नलिना दलिनी भिक्षणः श्रीकृष्णः काले वर्षन्तु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभारहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरतं शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चिदोदर्शकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहर धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्रोता पद्मासना या ब्रह्मच्युतो शङ्कर प्रविधिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनवानुसृते प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यम सकलं परस्मै नारायणेति समर्प्ये तत् अनाते चेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतम् समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः।